Hello students and welcome to G3 e-learning classes, class 10th, and today we are going to do our next poem, A Tiger in the Zoo. This is the poem number 3, A Tiger in the Zoo. And as I earlier told you that we can call the poem the poem, we can pronounce the poem. Okay, I hope you all have remembered. And so first of all, I'll give you some introduction of this poem. The presented poem, A Tiger in the Zoo, has been composed by Leslie Norris. The poet has compared the activities of a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. Means यहाँ पर जो पोएट है वो एक टाइगर की एक्टिविटीज़ को कंपेयर कर रहे हैं कि एक टाइगर विच इज़ लिविंग इन अ जू, कि जो वो जू में रह रहा है, और इन अ नेचुरल हैबिटेट मीन्स फॉरेस्ट. ठीक है, उन दोनों टाइगर्स का जो है वो कंपेयर यहाँ पर कर रहे हैं कि कैसे एक जो टाइगर है वो जू में बिहेव करता है और कैसे एक टाइगर जो है नेचुरल हैबिटेट में behave करता है. The description begins from the zoo and moves to the jungle. After thorough study of its natural habitat, it moves back again to the zoo. The tiger's helplessness in the zoo has been described nicely and makes us think about the relevance of zoos in the world. So let's start our poem. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet, in his quiet rage. So stalks here means walk slowly, vivid, clear, stripes, lines, pads, feet, velvet, soft, and rage, anger. So in this paragraph, the poet is explaining that the tiger in the zoo walks in the limited space provided to it in the cage. It takes a few steps. There are strips on its body which are quite prominent, or you can say the noticeable. Its paws are soft like velvet. No noise is produced when it walks on its pads of velvet. The tiger is silent but in rage. See, as I explain you that कि जो हमारे पोएट हैं वो बता रहे हैं कि जो टाइगर है वो उसको बहुत लिमिटेड स्पेस मिलता है जू के अंदर, केज के अंदर, उसको मूव करने के लिए, राइट. और ये सिर्फ इट टेक्स फ्यू स्टेप्स, बहुत थोड़े स्टेप्स लेता है. देयर आर स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी विच आर क्वाइट नोटिसेबल. ओके, नाउ हियर जो हमारे जो पोएट हैं वो डिस्क्राइब कर रहे हैं उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो कलर है, पैटर्न है टाइगर का, वो सब यहाँ डिस्क्राइब किया गया है. और इसके जो पैर हैं वो सॉफ्ट है लाइक वेलवेट. आपको पता है ना कि एक क्लोथ होता है एंड इट्स वेरी सॉफ्ट. एंड नो नॉइस इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन इट वॉक्स. और जब ये चलता है जू के अंदर तो ये कोई आवाज़ वहाँ पर नहीं कर रहा है, बट ये साइलेंट है लेकिन इन रेज मीन्स एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू एंगर, कि लेकिन ये गुस्सा है. ठीक है, हम सब जानते हैं कि जो ये वाइल्ड बीस्ट होते हैं इनके अंदर बहुत ही एंगर होता है. सो आवर नेक्स्ट स्टैंजा इज, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. So now in this stanza, the poet suggests that the cage is not the proper place for the tiger. Obviously, जो टाइगर हैं वो फॉरेस्ट में ही अच्छे लगते हैं, कि केज उनके लिए जो प्रॉपर प्लेस नहीं है. It is not its natural habitat. The tiger in the cage is a victim of human cruelty. Obviously, कि अगर हम किसी भी जानवर को अगर हम केज में रखते हैं, पिंजरे में रखते हैं, तो ये क्या है, क्रुएलिटी को शो करता है. ठीक है, यू कैन टेक योर ओन एग्जाम्पल कि हम ये क्वारंटाइन की वजह से अपने अपने घरों में जो है बंद हो गए हैं. क्या हमें अच्छा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. वी वॉन्ट टू बी फ्री, राइट. सो यूजुअली टाइगर आर फाउंड सिटिंग अंडर सम बुशेज़. ठीक है, यहाँ पर जो है स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस,
शेडोज़। तो यहाँ पर बताया गया है कि वो बुशेस में या लॉन्ग ग्रास में बैठते हैं नियर अ स्ट्रीम और वाटर हॉल। स्ट्रीम होता है मींस आपकी रिवर, या वाटर हॉल के जो साथ है वो बैठे होते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट में, राइट। एज सुन एज दे सी देयर प्रे लाइक डियर कमिंग देयर टू ड्रिंक वाटर, दे स्लाइड साइलेंटली थ्रू द ग्रास एंड किल देम। कि जैसे ही वो अपने प्रे को देखते हैं, अपने शिकार को देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, बहुत साइलेंटली धीरे धीरे उसके पास जाते हैं और एकदम से उसके ऊपर झपट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। द पोएट वांट्स टू कन्वे टू अस दैट दिस टाइगर शुड बी देयर इन द फॉरेस्ट, इट्स नेचुरल हैबिटेट। Now we will move to our next stanza. He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. See, snarling होता है showing the teeth. Jungle's edge means the border of the forest. Bearing means showing. White fangs means white teeth, and claws means nails. Terrorizing means frightening, right? So the poet produces further giving another suggestion that the tiger should be sitting at the jungle's edge in close vicinity of a village. ठीक है, कि जो टाइगर है उसको वो सजेशन देते हैं हमारे पोएट कि जो टाइगर है उनको जंगल के एज में बैठना चाहिए जो कि विलेज के पास हो, ठीक है। इट शुड बी टेरराइजिंग द पीपल पासिंग दैट अवे बाय शोइंग इट्स शार्प टीथ। अब यहाँ पर क्योंकि जो टाइगर का काम है तो पोएट भी वही इमेजिन कर रहे हैं कि जो टाइगर है उसको जो है वो किस लिए होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली टाइगर को देख के हम लोग बहुत ही टेरराइज्ड हो जाते हैं, बहुत डर जाते हैं। तो वो कहते हैं कि टाइगर का यही काम है कि जो भी पर्सन उस जंगल के पास से गुजरे तो उसको जो है डर जाना चाहिए बाय शोइंग इट्स शार्प टीथ। और जब वो देखे कि उसके शार्प टीथ बेयरिंग इट्स क्लॉज एंड प्रोड्यूसिंग लो साउंड ऑफ एंगर। नेक्स्ट इज बट ही इज लुक्ड इन अ concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. In this stanza, the poet expresses deep sympathy at the plight means unpleasant situation of the tiger that is imprisoned in a cell made of concrete. कि यहाँ पर वो अपनी सिंपथी शो कर रहे हैं टाइगर के लिए कि कैसे वो कंक्रीट के जो सीमेंट के मटेरियल से बना है, सैंड स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन से बना है, उसके अंदर वो रहता है। जबकि एक टाइगर सिंबलाइजेज करेज, राइट। तो इसको जो है ना वो फॉरेस्ट में रहना चाहिए। ही कैन नॉट कम आउट ऑफ इट because strong bars fixed at the concrete cell stop him. अब ये इस केज से बाहर नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग आयरन बार से बना है, कंक्रीट से बना है। And thus the poet says that the tiger's strength is locked behind the bars. The tiger shows no interest in looking at the visitors. वो कोई इंटरेस्ट शो नहीं करता विजिटर्स को देखने के लिए। Rather he keeps on stalking. Stalking means walking in anger and proud manner in the limited space of the cage. So our next paragraph is, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. In this paragraph or in this stanza, so first of all I'll tell you the meaning of some words. The patrolling cars means the police cars, and stares means looks angrily, and brilliant means bright and glorious, right? So the poet again talks the reader to the cage where the tiger is sitting in the cage and feeling unpleasant and restless. कि अब वो बता रहे हैं हमारे जो रीडर्स हैं उनको कि जो टाइगर है वो केज के अंदर बैठा हुआ है, एंड ही इज़ फीलिंग अनप्लेजेंट एंड रेस्टलेस। वो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है केज में रह के, और वो रेस्टलेस फील कर रहा है। ही हियर्स द साउंड क्रिएटेड बाय द पेट्रोलिंग कार्स ऑफ द जू अथॉरिटीज़।
अब जू में जो अथॉरिटीज़ होती है ना, वो अपनी पेट्रोलिंग कार्स मीन जो कार लेकर जो है वो बार बार वहाँ पर घूमती हैं एंड दे वॉच आउट की सब ठीक है. ही शोज़ नो इंटरेस्ट इन देम, वो उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता जो टाइगर है, क्योंकि वो मालूम है उसे कि इट्स डेली रूटीन. एंड द पोएट शोन हिम staring at the shining stars with his brilliant eyes. Thus the poem ends up at the point where it had started. अब वहीं पर ये ख़त्म हो रही है जहाँ से शुरू हुई थी. The poet raises a moral issue here. He intends to present a strong case against the cruelty on animals which are kept in cage. अब यहाँ जो हमारे पोएट हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं अथॉरिटीज़, जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उनसे, कि जो इनको केज में रखते हैं इन एनिमल्स को, उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक कार्रवाई होनी चाहिए. मीन्स उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए. इनको केज में नहीं रखना चाहिए. जितने भी एनिमल्स हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेट में जो है वो वहाँ पर अच्छे लगते हैं, इनको वहीं रहना चाहिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर पोएम. And now, as I have taught you the rhyming scheme and the figure of speech, so now you will find out the rhyming scheme of this poem and the figure of speech. Okay, rhyming scheme and figure of speech you will tell me. So I'll take your test on it. Thank you so much. If you find any difficulty, so I am there with you. I'll make you understand. But first, you will try to find these things from the poem. Thank you so much.